তাপস বা অমিতাভ একটু রিসোর্স পার্সনের খবর নাও। এই অমিতাভ বা তাপস কে আছো? তাপস, অমিতাভ। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, রিসোর্স পার্সনের খবর কি? হ্যাঁ স্যার, জয়েন করছে। ওই কো-হোস্ট কোথায়? এই যে হ্যাঁ, কৃষ্ণ সাইনি। হ্যাঁ হ্যাঁ। Krishna sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Will we Morning start? to sir. হ্যাঁ আছি আছি। স্যার জয়েন করেছে উনি। দেখেছি, ঠিক আছে, যে টাইম হোক, আর 3 মিনিট আছে। हाँ कृष्णा सर थोड़ा वेट करिए 3 मिनट। No issue, sir, no issue. हाँ अभी ज्वाइन कर रहा है तो सभी।
Good afternoon. Welcome to the second day of the 3-day International CRE program on impact on pandemic on teaching learning process for individuals with disabilities in inclusive classroom. We had 5 sessions yesterday, including the inaugural session. We had resource persons like Dr. Ratan Kumar Sarkar, Dr. Madhavi Sharma, Dr. Cherry May, and Dr. Devdulal Dottorai. Today, in the first session, we have Dr. Krishan Kumar Soni. Is a professor and consultant clinical psychology, Chandigarh. He will be speaking on barriers and way to improve the learning outcome. May I welcome Dr. Krishan Kumar Soni. Good afternoon, sir. Sir, ऐसा है कि though it is an international seminar, but ज़्यादातर participants हिंदी समझते हैं ज़्यादा. Right, sir. तो अगर आप थोड़ा मिक्स करके बोल पाएंगे तो ठीक रहेगा हमारे लिए भी. Sir, thank you, sir. Nice meeting you for the first time. You can start your presentation. If you have PPT, you can start sharing the screen. So, you are already the co-host. You are the co-host, so you can do it. Thank you very much, sir. Before I am starting my presentation, I formally going to start first of all, you hold out the Sir, little louder, sir. It's okay now? Yeah, this is better. Yes, this is better. So I must be thankful to organizing team, Dr. Tapas, Anirudh Brahman. I think that you are on this. I must be thankful to all the team who has invited me as resource person in CRE. So basically, we are going to present or we are discussing this barrier in learning outcome. Let me share with my slides only, sir. I hope my slides are visible. Yeah, slide is visible. You can make it full screen. Yeah, this is good. Yes, this is good. So basically, we are discussing. Only thing is the sound. Sound, there is still a problem. Now it's okay, sir. Yeah, this is better. This is better. Yes. So I will try to speak in both the language, Hindi or English, like bilingual. Yeah, they will be really helped. Otherwise, there is a problem. Definitely. So before I'm starting this presentation, I just make a background like who हम discuss कर रहे हैं, why we are discussing this barrier, right? Like for example, let me discuss in this way. Like if we discuss about mental illness or mental health, everybody thinks there can be various factors which can be responsible for mental health. बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. For example, if we are talking about biological factors, we are talking about psychological factors, we are talking about social factors. It means there is a huge range, from one range to another range, and all variables are very much important in this particular domain. The same line, if we are talking about barrier, so what do you think? Like learning is depend on only one factor, or learning is depend on various factors? It can also have a range. So today we will discuss all the ranges from personal to psychological to social science, all the government policies which will be involved in this particular domain. Because the main aspect to see the very good outcome of the learning. वही एक aspect है, वही एक main issue है, उसी के लिए हम आज सब हैं, उसी के लिए शायद आज CRE हुई है जिसका main topic अच्छे से conceptualize किया गया है, उसी को लेके हम. So like everybody knows what is education, and this is a fundamental right of every child. बहुत सारे प्रोग्राम चले थे, यूनिवर्सलाइजेशन प्रोग्राम चले थे प्राइमरी एजुकेशन के लिए, सर्व शिक्षा अभियान जो आप लोगों ने वो प्रोग्राम में प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम. All the program has been initiated by the government. Reason, the only one reason that we have to promote that particular. तो जागरूकता फैलानी है, हमको अवेयरनेस फैलानी है ताकि एजुकेशन सबको मिल सके, right? So that everybody knows this education is the only way which is giving you a positive and meaningful career. सिर्फ education ऐसा नहीं है कि डिग्री है, education ऐसा नहीं कि जॉब के लिए दिया गया. The problem is that when we are saying this education should be correlated with job, that is a big issue. जबकि दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो जितनी issues हैं, जितनी भी developmental changes हैं, for example, we start from moral values, we start from civic values, all values are dependent on education. So यहाँ पे education बहुत important part प्ले कर रहा है. The same issue
दैट वोंट डिफरेंशिएट कि हम एबल्ड बच्चे की बात कर रहे हैं या हम डिसेबल्ड बच्चे की बात कर रहे हैं। बोथ द पॉपुलेशन दैट इज वेरी मच। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था और उसके साथ राइट हुआ था, उन्होंने बहुत सारी रिपोर्ट बताई। उन्होंने ये बोला गया कि all the justice, freedom, equality that seems the part of this education. That was very important part. And with that education, we want to achieve and we want to address the important need of the child. These are vulnerable groups और ज़्यादा marginalization group है, उनको concentrate करना है। इसको मैं दूसरी easy language में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। For example, हम बात करते हैं तो mental health issues, या हम बात करते हैं psychiatric patients, या हम बात करते हैं mental issues। तो उनको उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन। द सेम थिंग हियर वी हैव टू डिक्रीज दैट गैप। और वो गैप कैसे कम होगा? द बेसिक पार्ट इज एजुकेशन। जब बात करते हैं साइकेट्रिक इश्यूज की, हम जब बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज की, तो सबसे पहला जो इशू आता है वो होता है अवेयरनेस। आईईपी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एजुकेशन, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, प्लेज एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट। Same that line, the education decrease that gap, and at the same time जो vulnerable groups हैं उनको कहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंक्लूसिव पार्ट की हम बात करते हैं, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा, आपको बताना चाहूंगा। जब 1950 की हम बात करें, 1950, उसमें जो स्कूल देखे जाए हमारी कंट्री में, दैट वाज 2 लाख 30, और 1950 1950 दैट स्कूल हैज बीन इंक्रीज्ड टू 9 लाख 30,000। और अभी अगर हम 2020 की बात करें तो 1.5 मिलियन। So you can see the changes. Why? Because we are talking about education system, we are talking about improvements, we are talking about so many other facilities for that particular domain, equality, dignity। और ऐसा बोला गया है कि जो हम स्कूलों की बात करें, टोटल ओवरऑल जितने स्कूल हैं आज के टाइम में इंडिया में, वहाँ पे 200 मिलियन बच्चे पढ़ते हैं। बट इंटरेस्टिंगली जो डाटा आया वो ये डाटा है कि इसमें से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो जो अटेंड करते हैं क्लास को, जो अटेंड करते हैं स्कूल को, दैट इज 1, इट मींस देयर इज अ गैप, ह्यूज गैप। 50 मिलियन अप्रोक्सीमेटली बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये जो इशू है, 50 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, दैट इज द ओनली इशू वी आर डिस्कसिंग। इसका रीजन क्या क्या हो सकते हैं, क्या बैरियर है उसके लिए, दैट वी आर डिस्कसिंग। तो बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई लास्ट फ्रॉम यू पीपल, ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल, you will give different people parameter, like low level of intelligence can be one issue, low level of achievement can be another issue, specific learning disabilities another particular issue, socio-cultural disadvantages can be different, और भी बहुत सारे इश्यूज जिनमें मैं बात करूँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, अगर मैं बात करूँ हाइपर एक्टिविटी, अगर मैं बात करूँ अंडर ट्रीटमेंट, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल कैन बी इन्वॉल्व इन पर्टिकुलर डोमेन। तो ये जो पर्टिकुलर डोमेन है, ये जो पहले मैं मेंटल, ये जो इश्यूज है साइकोलॉजिकल इश्यूज, दे आर वेरी पर्टिनेंट, बड़े ऑब्जर्वेबल है, पता लग जाएगा आपको किसी बच्चे को, पता लग जाएगा। बट व्हाट हैपेंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हिडन प्रॉब्लम में स्पेसिफिक लर्निंग, कवर्ट प्रॉब्लम बोलते हैं, इजीली आइडेंटिफिएबल नहीं होती, बट इसकी वजह से बहुत सारे ड्रॉप आउट, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो एज वी डिस्कस, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बोर्डरलाइन इंटेलिजेंस, एसएलडी, ये एक लार्ज प्रॉब्लम है, इनविजिबल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट कैन बी। कुछ बच्चे बहुत एफिशिएंटली कुछ जा नहीं पाते, जैसे मैंने बोला ड्रॉप आउट अगर होता है, तो ड्रॉप आउट का रीजन क्या है? देयर कैन बी सम रीजन ऑफ लर्निंग, देयर कैन बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिसनिंग, somebody is very dumb and deaf, जो कैपेसिटी है दैट इज नॉट अप टू दैट मार्क, थिंकिंग प्रोसेस, perceiving issues, memory and expression. So these are the different domains which is very very important. And we are discussing one by one how to identify these factors so that this barrier can be improved. And the ultimate aim to give a very good outcome. That is our aim. But this is not the enough reason. There are various other issues as we discussed. जैसे मैंने आपको बताया कि एक रीजन कभी भी हम पार्ट प्ले नहीं करते। अगर एक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आप डिस्कस करें, प्रैक्टिकल अपने आप को नेगेटिव डिस्कस करें, इवेंट डिस्कस करें, अगर घर में प्रॉब्लम, हाँ माहौल अच्छा नहीं है, डिस्टर्बेड माहौल है, तो उसमें एक सिर्फ एक फैक्टर नहीं हम इम्पोर्टेंट मानते, हो सकता है कि फादर इज अल्कोहलिक और हस्बैंड इज अल्कोहलिक, दैट इज ओनली रीजन, या
family के किसी member को psychiatry, that is the only reason. There can be various that can depend on socio-economic, that can be personality, that can be another way. So here, only the reason which we are discussing psychological is beyond that. That what is beyond that, we will discuss. Everybody have heard about this Maslow hierarchy. I will not go in detail. For example, जब भी कोई पैदा होता है ना, या जब भी कोई अपनी अपनी सारी स्टेजेस कंप्लीट करता है डेवलपमेंट की, जो नीड्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज से शुरू होती हैं. फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजिकल नीड, देन सेफ्टी नीड, देन लव एंड बिलोंगिंग, देन सेल्फ नीड, देन सेल्फ एक्सप्रेशन. बेसिकली वी स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड एंड वी यूज टू रीच सेल्फ एक्सप्रेशन. दैट इज अ प्रोसेस. और ऐसा बोला जाता है कि हम अगर बात करें हमारे इंडियन कौन कौन सेल्फ एक्चुअलाइज, फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी, फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा, यूज टू कॉल सेल्फ एक्चुअलाइज. बाकी जो मैक्सिमम पीपल हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, मैक्सिमम वी आर इन थर्ड और फोर्थ. वी आर नॉट सेल्फ एक्चुअलाइज. महात्मा बुद्ध वॉज सेल्फ. तो ये जो स्टेजेस हैं ये नॉर्मल हिरार्की है. बट अगर हम इसी नीड्स फुल नीड्स में कभी चेंज कर दें तो ये चीज़ थोड़ी चेंज हो जाती है. और इसी के हिसाब से बैरियर को आप समझने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल इफ स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी, तो बेसिक नीड्स आर नॉट. फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट, cleanliness, clothing, safe place. These are the basic issues. For example, if you have heard about this मध्यांतर भोजन, जो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खाना देना चाहिए, का रीजन था ना पर्टिकुलर, so that they can be more motivated. Their physiological need can be complete. After that, they can proceed to other. The another would be safety. Like for example, we are talking about emotional safety, physical safety. These are the basic. Then the another important is belonging. Belongingness means what? Belongingness means teacher, with role model, with friends, with you. And then another is self, like class, cultural, and then would come self. That will be very important. So we will just convert this maximum needs to. These are the very very important. If you will understand on this step and this hierarchy, it will be easily identified. And whatever we are discussing in another 45 minutes, all the issue will be related to these 5 domains. कोई भी ऐसा डोमेन नहीं होगा जिन 5 डोमेन है. आई एम टॉकिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल सेफ्टी. आप उसको एनालाइज करेंगे, आप उसको सोच के देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो नीड किसी ना किसी डोमेन से मिलती जुलती. देन हियर एज वी डिस्कस की बैरियर बहुत सारे हैं और उस बैरियर को हम स्टार्ट विद फिजिकल बैरियर. वी स्टार्ट विद राइट. अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? मेरे को लगता है इज दिस क्लियर टू यू? हेलो. हाँ सर, अभी ठीक है सर, थोड़ा. फाइन फाइन, मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ सर. हाँ जी. तो बहुत सारे जब हम बैरियर की बात करते हैं सर, तो बहुत सारे बैरियर में जैसे हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर, या फिर हम बात करते हैं जो जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो हम बात कर रहे हैं सर्विस सिस्टम की, जो हम बात कर रहे हैं पॉलिसी मेकिंग की, ये सारे बैरियर का पार्ट है. राइट. तो हम इन सब बैरियर्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिकली इट हैज बीन डिस्कस कि हम एक पूरे 3 बेसिक एस्पेक्ट जो है, जो 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 बैरियर्स हैं जिसकी हम बात करते हैं, जिससे ड्रॉप आउट ज्यादा होते हैं, लाइक स्टार्टेड विद सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. ये सारे अगर कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्स्ट वहीं पे लेके जाएंगे जहां हम बैरियर की बात कर रहे हैं. वो कॉन्टेक्स्ट वही डिस्कस करते हैं जहां हम बैरियर की डिस्कशन. तो आप इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश कीजिए. पोटेंशियल बैरियर ऑफ एजुकेशन क्या क्या हो सकते हैं. एज वी डिस्कस, फिजिकल बैरियर इज वन, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल बैरियर हो क्या क्या सकते हैं. देन अनदर इज परसेप्शुअल बैरियर, इमोशनल बैरियर, कल्चरल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, sand barrier, and integration barrier. So these are the barriers which is very very important to understand, right? And these barriers one by one, if we try to remove these barriers, तो हमको समझ में आएगा कि उस एजुकेशन का आउटकम कहीं ना कहीं ज्यादा आ रहा है. उसका आउटकम हमको लगेगा कि यस वी आर डूइंग इन द सेम पर्टिकुलर फील्ड.
सोशियो इकोनॉमिक बैरियर की जब हम बात करते हैं, क्या क्या हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक बैरियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एजुकेशन को सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ जोड़ के देखते हैं, लाइक बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहाँ पे एजुकेशन तो मिलता है, लेकिन उसको उसको पर्टेन करने का, उसको उसको जो अवेलेबिलिटी है, दैट इज अनअवेलेबल। तो यहाँ पे जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन ऐसे जहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती, वो एजुकेशनल नीड्स को मैट नहीं कर पाती, उस पॉपुलेशन में जो बैरियर है, दैट इज सोशियो इकोनॉमिक बैरियर। रीजन कैन बी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। रूरल एरियाज में स्कूल है जहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो पहुंच नहीं पाते। अभी मैं पेंडेमिक की लेके बात करता हूँ आपसे। जैसे पेंडेमिक जब शुरू हुआ, उस सब जगह ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। 70 to 80% ऐसे सिस्टम थे हमारे यहाँ जहाँ पे ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं थी, जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। So we are giving very good education, so we are giving very good material to the child, but what about internet facility? तो यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी जब है ही नहीं हमारे पास, तो प्राइमरी सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम उसको काम नहीं करते। अनदर वुड बी पॉवर्टी एंड अंडर डेवलपमेंट। ये अनदर दूसरा फैक्टर। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, डेवलपिंग कंट्री की बात करूँ, हमारे यहाँ कितनी मैक्सिमम पॉपुलेशन दे आर स्टेइंग इन रूरल एरिया, गाँव में रहती हैं, जिनके पास सोशियो इकोनॉमिक बहुत एफ्लुएंट फैमिली नहीं है, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं जो जो उनको अनमेट नीड। देन एज वी डिस्कस पेंडेमिक कंडीशन, पेंडेमिक कंडीशन में बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गया था एनवायरनमेंट। उस रिस्ट्रिक्शन से बच्चों को जो चीज मिलनी चाहिए थी, जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए थी, वो अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से दिक्कत है। राइट। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मीन व्हाट? लाइक किसी भी चीज को हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो मल्टी फैक्टोरियल चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक फैक्टर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सिर्फ अगर हम बात करें कि पुअर डेवलपमेंटल इश्यूज या ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज या पॉवर्टी कैन बी वन रीजन, आई विल से नो। देयर कैन बी अनदर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल, एटीट्यूडनल बैरियर। एटीट्यूडनल बैरियर मींस ऑन बोथ द पार्टी। वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट टीचर। देन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर एज वी डिस्कस, जैसे कहीं हम पढ़ने के लिए जाना है या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, स्पेशल स्कूल अवेलेबल नहीं है। अगर हम पर्टिकुलर डिसेबल बच्चों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उनको, दैट इज अ मेजर फिजिकल बैरियर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज चेंज सो मेनी इश्यूज। उन्होंने बहुत सारे लॉज निकाले जिसकी वजह से शायद अब चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस। अब ये शुरू हो गया कि कहीं ना कहीं आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी बिल्डिंग आप क्रिएट करते हैं तो वहां पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फिजिकल बैरियर को कम करना चाहिए। अगर आप देखें कहीं भी पब्लिक जगह पे जाते हैं, आप मॉल्स में जाते हैं, डिसेबल बच्चों के लिए अलग से कुछ इंडिकेशन बनाए, कुछ सिंबल दिए जिसकी वजह से पता लगता है कि ये रास्ता डिसेबल बच्चों। देन इन अप्रोप्रिएट करिकुलम। सारी जगह हम एक करिकुलम को फॉलो नहीं करते, हमको टेलर मेड टेक्निक चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मेडिसिन, हर जगह एक ही मेडिकेशन नहीं दे सकते ना, हर जगह एक ही ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से हर बच्चों का अलग अलग सिलेबस, हर बच्चों की मेंटल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको बाइफरकेट करते हैं। इसीलिए अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूँ, इसके हिसाब से अगर उनका करिकुलम डेवलप किया जाए वो ज्यादा बेनिफिशियल है। द मेजर एस्पेक्ट अनट्रेन टीचर। आप अपने सराउंडिंग में देखिए, अगर हम स्पेशल टीचर की बात करें, अगर हम काउंसलर की बात करें, अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करें, अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें, कितने हैं? इसलिए सरप्राइज, अगर मैं एक पर्टिकुलर डोमेन की बात करूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो इस पूरे इंडिया में अगर बात करें तो नॉट मोर देन 3,000। कैन यू इमेजिन? आप पॉपुलेशन देखिए एंड अवेलेबल फैसिलिटीज लेस देन 3,000। आप स्पेशल एजुकेटर का डाटा उठा लीजिए आरटी की वेबसाइट से, लेस देन 7,000, लेस देन 8,000। कैन यू इमेजिन? हम जिस पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, हमारे पास जो टीचर है, ट्रेन टीचर, वो बहुत कम। दैट कैन बी अनदर वेरी मेजर रीजन। और इसलिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम किसी भी चीज की फैसिलिटी देना चाहते हैं तो दो चीज हमेशा याद रखिए, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। तो अनट्रेन टीचर को हमें अवेलेबल कराना है, हमें ट्रेन टीचर को अवेलेबल कराना है, ताकि माहौल को चेंज किया सके, उस एजुकेशन को हम पर्टेन कर सकें। उसके बाद होती है इनएडिक्वेट फंडिंग। गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात। कुछ फैक्टर ऐसे जो हमारे हाथ में, कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फंडिंग, policy making, government inspections. These are not enough, but they are also working on the certain way.
उसके बाद आता है पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, देयर आर थ्री फ्लोर, और उसी फ्लोर्स के हिसाब से ये अनदर मेजर एस्पेक्ट इज पॉलिसी एज ए बैरियर। कई जगह आप देखेंगे स्पेशल एजुकेशन डिसेबल बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल थी और है भी नहीं। उन फैसिलिटीज को हमें देखना पड़ेगा, उन फैसिलिटीज को हमको ठीक करना पड़ेगा। उन्हीं फैसिलिटीज के बेस पे वी कैन शॉर्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैरियर। तो ये कुछ इश्यूज है जो बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसको हमें ध्यान रखना है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैरियर। अगर हम इन सारे बैरियर्स को तीन पर्टिकुलर डोमेन में डालते हैं, मेजर डोमेन अगर मैं बात करूं, एजुकेशन एनवायरनमेंट इज वन डोमेन, बिहेवियर एंड एक्शन, एंड तीसरा होता है इंडिविजुअल एट्रीब्यूट। ये जो तीनों एस्पेक्ट हैं, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट जैसे हमने बात की पर्सनैलिटी की, जैसे हमने बात की एटीट्यूड की, इसके अलावा जैसे हमने बात की एजुकेशनल एनवायरनमेंट, इसमें सारी चीज आ गई, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, करिकुलम आ गया, टीचर्स आ गए, ये सारा चीज। और उसके बाद हमारा मेन है कि बिहेवियर क्या है हमारा, हाउ मच वी आर पॉजिटिव, और हमारा एक्शन क्या है उसको ठीक करने का। तो उस एक्शन को और उस बिहेवियर को, उसको हमें ठीक करना है। दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, एजुकेशनल और बिहेवियर, तीन एस्पेक्ट हैं जो इस पूरे बैरियर को डिपेंड करते हैं। जैसे इस दूसरी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर हम बात करें कि किसी को डिप्रेशन हुआ, राइट, तो डिप्रेशन में तीन चीजें होंगी, थॉट, इमोशन और बिहेवियर। इन तीनों के अलग अलग रोल हैं, लेकिन तीनों एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं सेम, एजुकेशन का, इंडिविजुअल का और बिहेवियर का। तीनों का रोल अलग अलग है, लेकिन तीनों रोल प्ले कर रहे हैं किसमें, बैरियर। हम इसको एक ही करके अगर सॉर्ट इट आउट करेंगे, कि हम प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, देन मे बी इट विल बी हेल्पफुल। तो ये एक अनदर एस्पेक्ट है जो हमको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसी अनदर एस्पेक्ट के बेस पे वी कैन डू समथिंग। आई थिंक नाउ इज वॉइस इज ओके। कोई मेरे को बताएगा, फीडबैक देगा कोई? भी ठीक है वॉइस? हेलो, फाइन, फाइन, थैंक यू। तो राइट, ये हमने बैरियर की बात की जो बहुत मोस्ट कॉमन बैरियर है। एटीट्यूडनल बैरियर में क्या समझते हैं आप? एटीट्यूड का मतलब क्या है? देखिए, हर चीज में ना कुछ प्रेजुडियूस और कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है हमारा, वो एक एटीट्यूडनल बैरियर है। इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, ये एटीट्यूडनल बैरियर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास एक टीम बनाने जा रहे हैं, आप कुछ खेलने जा रहे हैं, आप उसके साथ एक टीम बनाने जा रहे हैं। आपके पास दो तरह के बच्चे हैं, एक नॉर्मल बच्चा और एक बच्चा थोड़ा सा डिसेबल्ड बच्चा। आप कौन से बच्चे को लें? यू विल ट्राई टू प्रेफर दैट नॉर्मल चाइल्ड। यू विल थिंक कि अगर मैं डिसेबल्ड बच्चे को लूंगा तो शायद हो सकता है मैं जीत ना पाऊं, हो सकता है मेरे को और कोई प्रॉब्लम आए। ये सारी चीजें दैट इज नोन एज एटीट्यूडनल इश्यू, राइट। हमें बहुत इजीली हम कह देते हैं कि मेंटल इलनेस को ठीक करना बड़ा आसान है। अगर किसी के घर में कोई ऑटिज्म बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी घर में एडीएचडी बच्चा है, इसको हो, बट दैट स्टिग्मा इज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर। किसी को बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, वो इजीली शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, यार मुझे बीपी है, यार मुझे शुगर है, यार मुझे डायबिटीज है। बट इफ somebody is having issues in mental health और disability, they will unable to share। उनको शेयर करने में बड़ा दिक्कत आएगा। वो स्टिग्मा रिलेटेड है बिकॉज डिसेबिलिटी के साथ। तो इसलिए देर इज वन मेजर इशू दैट इज एजुकेशनल बैरियर, और ये स्टिग्मा हमको दूर करना है, ये प्रेजुडियूस और डिस्क्रिमिनेशन दूर करना है। वंस दिस डिस्क्रिमिनेशन विल बी लेस, देन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। सो दिस कैन बी वन फैक्टर, राइट। तो इसके अलावा और फैक्टर क्या हो सकते हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं? जैसे हमने बात की एटीट्यूडनल फैक्टर की, हमने बात की स्टिग्मा की, बात की प्रेजुडियूस की, बात की। देन कुछ जो एटीट्यूडनल बाइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया इनफ्योरिटी। आप जब डिसेबल्ड बच्चे को देखते हैं तो इनफ्योरिटी वाली। देन पिटी, हमको उस पर दया आती है, पता नहीं क्यों, कहाँ से ये फिनोमेना डेवलप हुआ। इफ समबडी इज नॉट एबल्ड, वी हैव टू शो आवर सिंपैथी। वी शुड नॉट शो आवर सिंपैथी, सिंपैथी की जरूरत नहीं है, वहां पे एम्पैथी की जरूरत है। देन इग्नोरेंस, राइट। देन स्प्रेड इफेक्ट, अगर एक बच्चा किसी डिसेबिलिटी का है तो हम उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं कि सारे बच्चे, अगर उसको ये दिक्कत है, इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है, इज अनेबल टू डू, हमने उसको स्टिग्मा कर दिया, हमने उसको मार्क लगा दिया। देन अंडर एस्टिमेशन,
आप स्कूल में जाके देखिए, तो हम अंडर एस्टिमेट करते हैं बच्चों को। या डिसेबल्ड बच्चा ये काम नहीं कर पाएगा, अगर बच्चा नॉर्मल है तो शायद ये काम कर पाएगा। तो अंडर एस्टिमेशन, देन डिस्कम्फर्ट, these are the few issues which is a major important part of attitudinal barrier. फिजिकल बैरियर जैसे हमने बात की कि बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, वॉशरूम, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना, और कुछ टेक्नोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो शायद डिसेबल्ड बच्चे नहीं कर पाते। तो दीज आर द फिजिकल बैरियर वी शुड अंडरस्टैंड। अगर आप कुछ आरसी में भी देखेंगे, आप रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और बहुत सारी ऐसी चीजें जाएंगे, वहां पे फर्स्ट जो चीजें हैं वो क्या होती हैं कि वहां पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास प्लेग्राउंड है, आपके पास डिसेबल्ड टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। दीज आर द फ्यू फिजिकल बैरियर विच यू हैव टू डील। और वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट है जो डिसेबल्ड के साथ हमें डील करना है, राइट। अगर वो पार्ट डील होता है देन वी कैन थिंक ओके यू हैव टू रीच ऑन सम लेवल। देन इनएप्रोप्रिएट करिकुलम, एज वी डिस्कस, जैसा हमने डिस्कस किया कि हमें टेलर मेड अप्रोच लेनी है, हमें बच्चे की इंक्लूसिव एजुकेशन को देखना है, उसकी कैपेसिटी को हमको ध्यान में रख के करिकुलम डेवलप कर। इसीलिए अगर आप देखेंगे कि अगर एसएलडी की बात करें, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तो वो जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर है उनका सिलेबस थोड़ा अलग है, उनके अंदर अलग फैसिलिटीज मिलती है, उनके अंदर अलग इंफॉर्मेशन मिलती है जो सीबीएसई बोर्ड भी हेल्प करता है, क्योंकि हम एसएलडी को भी अब डिसेबिलिटी में काउंट करने लगे। तो वो जो करिकुलम है दैट इज मेड अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। जैसे किसी बच्चे को मैथ में डिसेबिलिटी है, तो क्या करते हैं, उसका मैथ जो है वो मैट्रिक में या 10th में हटा लेते हैं, वहाँ मैथ की जगह तीसरा नया सब्जेक्ट देते हैं। तो दिस करिकुलम वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीज दैट बैरियर। देन अनट्रेन टीचर, एज वी डिस्कस कि जो टीचर का इस समय जो अवेलेबिलिटी हमारे पास कम है, जो ट्रेन टीचर नहीं है हमारे पास, उसको वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू इनहेंस। इसीलिए इतने सारे प्रोग्राम शुरू हुए हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे बहुत सारी सीआरसी ओपन हुई है इंडिया में, आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप हुए हैं। अभी बीएड बहुत सारे डोमेन्स में डेवलप हो रही है, डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये सारा रीजन क्या है, वी हैव टू ट्रेन द टीचर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड। हमेशा इसमें क्या होता है डिसेबिलिटी में, जैसे मैंने बोला, सिंपैथी की जरूरत नहीं है बच्चों, एम्पैथी की जरूरत है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट चाइल्ड, just put yourself in others shoes, that is empathy. So trained teacher will empathize that particular need. Inadequate funding, as we discussed, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, फंडिंग हमारे हाथ में नहीं है। these are the few factors which is very important. Poor education system, poor organization, right? So these are the few issues जो एक बैरियर के रूप से काम कर रहे हैं। पॉलिसी बैरियर ने डिस्कस किया, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, जब हम तीन बेसिक पिलर की बात कर रहे हैं, बेसिक डोमेन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया इंडिविजुअल डोमेन, एक्शन और बिहेवियर डोमेन, तो कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ बिहेवियर। हम अपनी इंफॉर्मेशन किस लेवल तक परटेन कर रहे हैं, किस लेवल तक हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम्युनिकेशन बहुत मेजर पार्ट। अगर मैं आज का लेक्चर किसी और भाषा में लेता, किसी और लैंग्वेज में लेता, क्या आप समझ पाते हो? मुझे अकोमोडेट करना पड़ेगा, मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। दैट इज कम्युनिकेशन। अगर वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज, चाइनीज और जापानीज लैंग्वेज, देयर इज नो नीड फॉर दैट लेक्चर। तो जरूरत ही नहीं है इस लेक्चर का, बिकॉज वो समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को। तो कम्युनिकेशन बैरियर इज अ वेरी मेजर बैरियर। इसलिए हमको देखना पड़ेगा कि बच्चे जो सेंसरी डेप्रीवेशन तो नहीं, किसी बच्चे, अगर किसी बच्चे को सेंसरी डेप्रीवेशन है, कम्युनिकेशन है ही नहीं उसके पास, तो लर्निंग का आउटकम क्या होगा? तो कम्युनिकेशन बैरियर इज अ मेजर। देन प्रोग्मेटिक, प्रोग्रामेटिक बैरियर, जैसे मैंने बताया कि लैक ऑफ एक्सेसिबल इक्विपमेंट, insufficient टाइम, नो कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, नॉलेज, ये सारे प्रोग्रामेटिक बैरियर्स हैं जो हमको ध्यान में रखना। अनदर इंडिविजुअल बैरियर की अगर हम बात करें तो इसमें तीन मेजर बैरियर है, जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल बैरियर, मोटिवेशनल बैरियर एंड व्हाट डू मीन बाय इमोशनल बैरियर। देखिए, सिर्फ हम पॉलिसीज को चेंज करके, सिर्फ हम एनवायरनमेंट को चेंज करके, सिर्फ हम कैरिकुलम को चेंज करके कोई कोई चीज हासिल नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल इमोशनल बैरियर, आपको बच्चे की नीड्स, बच्चे के इमोशन को समझना पड़ेगा, आपको बच्चे के मोटिवेशन को समझना पड़ेगा, आपको बच्चे की पर्सनल एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिर्फ आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हम जब बात कर रहे हैं ट्रेंड टीचिंग स्टाफ या ट्रेन टीचर, ट्रेन टीचर का मतलब क्या है? सिर्फ ट्रेन टीचर मीन्स नॉट ओनली कलर, वो आएंगे,
काम किया, कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया, वो चले जाएंगे। नो, आवर वर्क इज समथिंग एल्स। वी आर स्पेशलाइज्ड इन मेंटल हेल्थ, वी आर स्पेशलाइज्ड इन डिसेबिलिटी। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द बैरियर ऑफ चाइल्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड इमोशनल बैरियर ऑफ द चाइल्ड, वी हैव टू अंडरस्टैंड अदर बैरियर्स ऑफ द चाइल्ड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So these barriers, if we will try to inculcate, maybe we can see. जैसे हम इमोशनल बैरियर की बात करें, जैसे फियर ऑफ फेलियर, डिसेबल बच्चे को सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लगती है माहौल में आने में, उनका फोकस नहीं लग पाता उन चीजों में, उनको लगता है कि वो चेंज नहीं कर पाएंगे अपने आप को। वो जो इंफॉर्मेशन, वो जो चीजें हैं, वो हमसे चेंज में दिक्कत क्या क्या आती है ना, कोशिश करते हैं, नॉट वेरी इजी, बट जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी बच्चे के इमोशनल फैक्टर को, मोटिवेशन फैक्टर, तो कुछ हेजिटेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, फियर ऑफ फेलियर, lack of focus, lack of previous knowledge, and boredom. These are the few issues which is very very important. अगर हम इसी को डिसेबिलिटी मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें, तो डिसेबिलिटी मॉडल जैसे 3 टाइप के होते हैं, आप लोगों ने शायद सुना होगा। वन इज चैरिटी मॉडल, वन इज मॉडल ऑफ कस्टोडियल केयर, एंड थर्ड इज बायोसेंट्रिक मॉडल। इन सब के अलावा जो बहुत सारे आज के डोमेन में बात, जैसे हम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं माहौल को, जैसे कि डे टू डे नीड्स के अकॉर्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन मिले, दैट इज नोन एज फंक्शनल मॉडल। तीसरा ह्यूमन राइट्स। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे, आप किसी को मेंटल इलनेस को अगर मेंटल इलनेस भी बोलेंगे, वो डेरोगेटरी है। इसको अपंग बोलेंगे, दैट इज डेरोगेट। दिव्यांगता बोलते हैं ना, एक नया टर्म यूज है दिव्यांगता, का मतलब ये है ना कि हमें इस डेरोगेटरी टर्म से हटाना है। तो ह्यूमन राइट्स मॉडल, तो ये मॉडल्स हैं। इन डिफिकल्टीज को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन डिफिकल्टीज को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमें ऑप्शंस देने पड़ेंगे। तो अवेलेबल ऑप्शंस हमारे पास जो लैक कर रहे हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये टू प्रोवाइड। फैमिलीज को बताना पड़ेगा। हम साइको एजुकेशन की बात करें, अगर हम एजुकेटिव सेशन की बात करें, दैट वी हैव। तो इनकन्सिस्टेंसी है हमारी चीजों में, लैक ऑफ इक्वलेंस है, उसको measure करना। तो ये बैरियर को हम ठीक करेंगे, लेकिन कुछ डिफिकल्टीज हैं, इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। राइट, कोऑर्डिनेशन करना है हमें, सर्विसेज में, डिपार्टमेंट में, स्टाफ जो अनसेटिस्फैक्टरी, उनकी अनमेट नीड को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फंडिंग स्टूडेंट्स की जो जो सफिशिएंट नहीं है, वी हैव टू लुक आफ्टर दैट आल्सो। तो हमें डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखिए आप, जब भी हम डिसेबिलिटी की बात करें, जब भी हम एक ग्रुप की बात करते हैं, वी हैव टू बाइफरकेट, हम किस ग्रुप को डील कर रहे हैं। अब देखिए, बीएड अलग अलग जगह पे क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अलग बीएड है, सेंसरी डेप्रिवेशन की अलग है, विजुअल इंपेयरमेंट की अलग है, हियरिंग इंपेयरमेंट की अलग है। इसका मतलब हमको एक ग्रुप बनाना है ना, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग इनकी अलग नीड है, और उस नीड्स को हमें टारगेट करना है। अगर हम उस नीड्स को टारगेट करते हैं, देन ओनली वी कैन अचीव अवर गोल। ट्रेंड एड्स देंगे हमको जो सफिशिएंट होगी, अवेलेबिलिटी को हमें चेंज करना है, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, है ना, ये सारी चीजें हमको चेंज करनी पड़ेगी जब हम इसकी बात करें। जो डिसेबिलिटी अनरिकॉग्नाइज है, अब देखो, पहले जो डिसेबिलिटी थी वो बहुत कम थी, अभी कुछ डिसेबिलिटी बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे हम बात करें डिसेबिलिटी की, जैसे कुछ एसिड अटैक शुरू हो गया, वो एसिड अटैक की बात करें, वो बढ़ गया है। और उसके बाद जो पेरेंट्स की अनरियलिस्टिक जो डिमांड्स है, जो जो मिनिमाइज डिमांड है, उसको हमें डिनाई करना चाहिए। पेरेंट्स की चॉइस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें टीचर्स के स्ट्रेस लेवल को भी ध्यान में रखना। ऐसा नहीं सिर्फ स्ट्रेस जो होता है वो पेरेंट्स को है, आप लोग दिन रात पेशेंट से डील करते हैं, बच्चों से डील करते हैं, डिसेबल बच्चों से, वो स्ट्रेस लेवल भी है कि साथ आपका अपना मेंटल हेल्थ ठीक रखना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपका मेंटल हेल्थ ठीक होगा, देन ओनली यू कैन प्रोवाइड गुड इन्फॉर्मेशन, राइट। तो दैट इज अनदर एस्पेक्ट। तो उसके बाद क्लास साइज, अगर आप देखोगे, इंक्लूसिव क्लास की बात करूँ, तो साइज होता है क्लास का, वो रिड्यूस होना। कंडीशन एंड डिसेबिलिटी जो है बहुत चैलेंजिंग है टीचर के लिए, वो अप्रोप्रिएट क्लास के अकॉर्डिंग है, और एक्सेस ऑफ लीव। So these are the few issues which is very very transport barrier we have to decrease, ट्रांजिशनल प्रोग्राम भी है टू इंक्रीज, एटीट्यूड ऑफ टीचर, प्रिंसिपल, है ना, वो सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा जब हम डिस्क्रिमिनेशन जो हमने डिस्कस किया, दैट वी हैव टू सी। अब इन सबके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूँ मैं। हमने बैरियर की बात की, हमने बताया कि प्रॉब्लम बहुत सारी हैं,
हमने बताया कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमको ठीक करने हैं। इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हैं, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं बैरियर। अगर हम बैरियर को ठीक नहीं करेंगे तो व्हाट इज द इशू, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस लो लिटरेसी लेवल। अब देखिए, मैं जब बात कर रहा हूँ कि ड्रॉप आउट मोर देन 60 मिलियन बच्चों का ड्रॉप आउट है। अगर हम इन बैरियर्स को खत्म नहीं करेंगे, जो ड्रॉप आउट रेट है दैट विल बी, लिटरेसी लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे लिटरेसी लेवल कम हुआ, आर एजुकेशन विल बी कम, लो डाउन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन विल बी लो डाउन। जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लैक ऑफ डेली लिविंग स्किल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब बच्चे को, डिसेबल्ड बच्चे को स्कूल बुलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो सीखता है, डेली लाइफ को सीखता है वो। क्योंकि डेली लाइफ से एडीएल जिसको हम बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इससे उसका सेल्फ स्टीम बढ़ता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उस कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए ही इज कमिंग टू द स्कूल। और वो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, एडीएल अगर आप बच्चे को सिखाते हैं क्लास, उसका हाइजीन, ग्रूमिंग, उसका वॉशरूम ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, पर्सनल सेफ्टी, दैट ऑल द एडीएल विल। बोलते हैं ना कि जब मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात, हम पेरेंट्स को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपका बच्चा हो सकता है नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव ना करे, लेकिन वो अपना ख्याल रख पाएगा, डे टू डे लाइफ में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। इसका मतलब वो कहाँ से एडजस्ट करेगा, जब हम उसको डेली लिविंग सिखाएंगे, जब हम एडीएल सिखाएंगे, देन ओनली ही कैन एडजस्ट। इसके अलावा उसकी सेल्फ स्टीम इंप्रूव होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, आप देखो, कोविड टाइम की बात करता हूँ और पेंडेमिक की, जब से स्कूल बंद हुए, बच्चों का साइकोलॉजी चेंज हुआ, बहुत सारे बच्चों में एंग्जाइटी सिम्टम आने शुरू हुए। अभी बच्चे स्कूल जाके खुश नहीं है, दे वांट ऑनलाइन एजुकेशन। अब बच्चे दे आर वेरी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन, दे वांट कि स्कूल भी ऑनलाइन होना चाहिए, एग्जाम भी ऑनलाइन। उससे कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस कम हुआ है, उनका सेल्फ स्टीम कम हुआ है। और एंग्जाइटी वाले बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हमने भी कोविड के टाइम में देखी। कुछ ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता तो वो सारी चीजें, इन्फॉर्मेशन कहाँ से गैदर करेगा, पेरेंट्स, जो पेरेंट्स से इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, दैट इज नॉट ह्यूमन। उस इन्फॉर्मेशन को हम पूरी तरह से सक्सेसफुल इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, राइट। सो बेसिक स्किल, लाइफ स्किल, ऑल आर लर्नड फ्रॉम स्कूल। तो अगर बैरियर्स को हम इम्प्रूव, रिमूव नहीं करेंगे, इरेडिकेट नहीं करेंगे, द प्रॉब्लम विल, और वो जैसी प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, ये सारे डोमेन आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेसी लेवल कम हो जाएगा, सेल्फ स्टीम कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम आ जाएगा, डेली लिविंग में सीख पाएंगे, ये सारी चीजें। देन पुअर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, लैक ऑफ एक्सेस टू स्किल एंड नॉलेज, ये सारी चीजें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें ध्यान में रखें। अभी हाउ टू इरेडिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने बैरियर की बात की, हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात की, अब इसको ठीक कैसे करें, शायद उसी के लिए मेन मकसद है, वही हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो फंडिंग 1, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना 2, स्टूडेंट टीचर अटेंडेंस को बढ़ाना 3, एंड इम्प्रूव लर्निंग। तो पूरा एक स्टेटस है, पूरा एक सर्कल है जिसको हमें देखना, फंडिंग टू लर्निंग आउट। और इसको इस चारों स्टेजेस में बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो आपसे रिलेटेड है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए, जिसमें आपका ऑपरेशन। जब हम इसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं, इरेडिकेट करने की बात करते हैं, we will say from where to start. Should we start from school? क्या हमें पॉलिसी से स्टार्ट करना पड़ेगा, या हमें कैरिकुलम से स्टार्ट करना पड़ेगा? फ्रॉम वेयर शुड वी स्टार्ट? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी शुड कलेक्टिंग डाटा। तो डिसेबिलिटी का डाटा जब हमारे पास आएगा, जब हमारे पास ये डाटा आएगा, कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, दैट इज वन इंडिकेशन। उसके बाद एड्रेस करना है हमको स्टिग्मा को, पेरेंट्स को और कम्युनिटी। हमेशा ध्यान रखिएगा, आप जब तक उनको उनको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप उनको साइको एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप उनको इन्फॉर्मेशन पर्टेन नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं है। अभी भी आप जब काम करने अपने रूरल एरियाज में जाएंगे, दे आर नॉट अवेयर अबाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आपको बताऊं, बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस तो वो ऐसे बड़ा हो जाता है, पता भी नहीं लगता, कम्युनिटीज को पता ही नहीं लगता, क्योंकि काम करने का जरूरत नहीं होता। ज्वाइंट फैमिली होती है रूरल एरियाज में, खेत में गए, पानी दिया, दैट इज फाइन टू देम। और उतना उसके लेवल पे उनको आइडिया नहीं लगता कि इसका दिमाग कुछ कम है, इसकी बुद्धि कुछ कम है। उसके बाद लैक ऑफ पेरेंट एंड कम्युनिटी जैसे नजर आते हैं। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो इससे काम कर रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिहेबिलिटेशन काउंसिल, आप सब अवेयर होंगे इसके बारे में। तो सीआरई प्रोग्राम है, दैट इज ऑल्सो देन
मेंटल हेल्थ एक्ट, ये मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया 2017 का। आज से जो आपने सुना है नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये सारे जो एक्ट हैं ये गवर्नमेंट एजेंसी जो इसी में काम है। तो हमें प्रमोट करना है केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको रिजोल्व करना है, उनकी गार्जियन एंड ट्रस्टी को हमें पॉइंट करना है। जैसे आज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात करूं मैं, तो उसमें हम आजकल एक नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेट क्यों करते हैं? ताकि हम उसकी प्रोग्रेस को देख, मेंटल हेल्थ में जो इश्यूज है उसको देख सकें। इसलिए टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब हम इरेडिकेट करने की बात, जब हम इसको ठीक करने की बात। देन कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने चलाए हैं, जो दैट इज रिलेटेड विद आउटकम ओनली, लर्निंग आउटकम। जैसे डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, रीजनल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ये सारे जो कुछ स्कीम्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज ओनली फॉर दिस ओनली। देन ये सारे जो आपको अच्छे से अवेयर होंगे, अब बीआरसी प्रोजेक्ट इसलिए है टू सर्वे द डिसेबल्ड पॉपुलेशन, टू प्रिवेंट, टू डिटेक्ट, है ना, इनको फिल्टरिंग आउट करना, ये सारे इनका बेसिक एस्पेक्ट है। वोकेशनल ट्रेनिंग देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बिल्कुल रिलेटेड टू डिसेबिलिटी, जैसे हमने बात की, डिसेबिलिटी को अंडरस्टैंड करना, उनकी नीड्स को, अनमेट नीड को कंप्लीट करना, एम्प्लॉयमेंट को बात करना, हम गवर्नमेंट फोर्स को बढ़ाना, ये सारे इश्यूज है जो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग विद एजुकेशन आउटकम प्लस डिसेबल्ड चाइल्ड। देन कुछ एनजीओ है जो इस फील्ड में काम कर रही है, लाइक दिस इज एन एनजीओ विच इज बेसिकली वर्किंग, राइट। एबिलिटी फाउंडेशन है, कुछ एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी जो इसी फील्ड में आगे चल के इसको काम कर रहे हैं, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इस फील्ड में बहुत आगे तक काम करें, और बिना इनके सहयोग के मैं आपसे बताऊं कि हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट इश्यू और इंडिविजुअल कैपेसिटी से कोई कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए, बहुत सारी संस्थाएं एक साथ काम करनी चाहिए, और उसी संस्थाओं के बेस पे वी कैन इरेडिकेट, वी कैन इम्प्रूव अवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा फ्यू नाउ few other, this one how to breaking down these particular issues as we discussed previous slide, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इससे। एक जो ग्राफ है इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे को लगता है अगर ये ग्राफ आप समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं इंक्लूजन करेक्टरिस्टिक, जब हम बात करते हैं कि कुछ कुछ ऐसी नीड्स हैं जो हमको ठीक करना है, कुछ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो हमको डेवलप करना है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हमको लगता है इंप्रूव करने से माहौल कैन बी, ऑल इन द सेंस द लर्निंग आउटकम कैन बी। इसको इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना है? देखिए, सबसे पहले हमको जो स्टूडेंट की डिफिकल्टी है उसको हमेशा ध्यान रखें, ये पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जो फिजिकल एबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, अब देखिए सारे जो डोमेन है वो उन्हीं एटीट्यूडनल इश्यूज से रिलेटेड है, उसी सोशल डोमेन से रिलेटेड है, उसी पर्सनल इश्यूज से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है, जिसको हम एक एक करके ठीक करने की कोशिश है, तो शायद इस बैरियर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेन एस्पेक्ट क्या है इसको इम्प्रूव करने का, सो दैट हम जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं डिसेबल्ड बच्चों के लिए वो एक पर्टिकुलर जगह पहुंचे, उनको हम इतना सक्षम बना दें, इतना हम कैपेबल बनाएं ताकि वो अपना काम एटलीस्ट कर सकें। उनको हम बेसिक नॉलेज दे सकें जिससे उस नॉलेज से दे कैन सर्वाइव। हमारा बेसिक एम क्या है? बच्चे की हेल्थ है। बेसिक एम क्या है? ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी। बेसिक एम क्या है? वो अपनी डिग्निटी से जी सके। उसके लिए हमको कुछ कुछ चीजें जो शायद चेंज करने की जरूरत है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है, और इन्हीं चीजों के साथ मैं कंक्लूड करूंगा अपना सेशन, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क। हम इन बैरियर्स खत्म कर सकें, बैरियर्स खत्म करने के लिए बच्चों की हेल्प कर सकें, ताकि उसका जो करिकुलम है, जो उसकी लाइफ है, एटलीस्ट वी कैन सर्वाइव, एटलीस्ट वी कैन हेल्प इट आउट, एटलीस्ट वी कैन डू हिज वर्क, वो समाज में जी सके। और उसी के लिए हम ये सारा प्रोग्राम, with these word only I will conclude my presentation. Thank you very much.
Should I invite my questions myself? If you have any questions, any doubts, any clarification, any queries, please आप डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू इश्यूज इन चाइल्ड, है ना, कुछ भी आपको लगे जो आई कैन बी हेल्पफुल, आप प्लीज डिस्कस करें ओपनली। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को या यू आर हेल्पलेस? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरीज है, कंट्रीब्यूशन, यू कैन डिस्कस। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। देखिए कुछ भी आपको लगता है, जो हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, जब हम चाइल्ड की डिसेबिलिटी की बात करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों की शायद आप देखते होंगे, तो उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हैं, तो मेरे को लगता है दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ हम डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से डे टू डे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो आप सभी लोग फील करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा बच्चा आ गया एडीएचडी का या कंडक्ट डिसऑर्डर का, आपको कैसे हेल्प करना है, समटाइम वी फील हेल्पलेस, इसके बाद क्या? तो हियर एट दिस पॉइंट, एट दिस प्लेटफॉर्म वी कैन डू। तो आप प्लीज शेयर कीजिए, इंटरेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है श्योरली आई विल डिस्कस विद यू। They can unmute themselves or what? आशा, आशा आपने बात की हाउ टू टीच ए चाइल्ड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी विद इन द क्लासरूम सेटिंग सो एज टू स्टिक ऑन द इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए मैंने आपको मैं सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश करता हूँ। जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हमने सबसे पहले बताया कि हम बाइफरकेट करेंगे, हम क्लासिफाइड करेंगे, हम कौन सी डिसेबिलिटी को डील कर रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में अलग अलग डोमेन है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनेबल, एजुकेबल, है ना, ये आपने शायद अच्छे से सुना होगा, समझा भी होगा जो आपके सिलेबस में होगा। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जिस बच्चे से हम डील कर रहे हैं वो ट्रेनेबल बच्चा है, वो एजुकेबल बच्चा है, या वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइवलीहुड कर पाएगा। अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर लें उस बच्चे को और उसके हिसाब से उसको एजुकेशन दें, फॉर एग्जाम्पल हमको ये पता होना चाहिए कि हम बॉर्डरलाइन बच्चे को डील कर रहे हैं, हम माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं या मॉडरेट लेवल की बात कर रहे हैं। तो जितना आप पीछे की तरफ जाएंगे, सीवियर, प्रोफाउंड, मॉडरेट, वहां पे मेजर डोमेन है वो है एडेप्टिव बिहेवियर। वहां पे इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, वहां पे हम बहुत ज्यादा बात करते हैं अडेप्टिव फंक्शनिंग की। तो अगर हम अडेप्टिव फंक्शनिंग उसको सिखा पा रहे हैं थ्रू बिहेवियर थेरेपी, फॉर एग्जांपल रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, है ना, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, टाइम आउट टेक्निक, ये सारी टेक्निक उससे बहुत एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर आप जैसे जैसे बॉर्डरलाइन की तरफ जाएंगे, तो वहां पे हम बात करेंगे एजुकेशन पर से, वहां पे हम बात करते हैं नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। तो दो अलग अलग है, नॉलेज बेस्ड, एक अडेप्टिव बेस्ड। तो आप अडेप्टिव की तरफ जाएंगे तो वो ज्यादा थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा उससे। बिहेवियर थेरेपी कैन वी कैन इंक्लूड, छोटी छोटी चीजों को सिखा पाएंगे, उसके एडीएल को इंप्रूव कर पाएंगे। तो दैट्स डिपेंड, राइट। असीम कुमार जी ने पूछा है व्हाट इज इमोशनल बैरियर। असीम जी बेसिकली देखिए, अगर हम इमोशनल इश्यूज की बात करूं मैं, तो बच्चों में बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं। नॉर्मल बच्चों की अगर बात करूं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बड़ा कॉमन है। इसी तरह से डिसेबल्ड बच्चों की बात करूं तो उनके अंदर उसका जो उसका प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है। वो उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो एनवायरनमेंट को लेके दे आर वेरी मच सेंसिटिव। वो क्रिटिसिज्म को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं डिसेबल्ड बच्चे, मैं आपको बताऊं। वो जो सेंसिटिवनेस है दैट इज पार्ट ऑफ इमोशनल। वहाँ पे इमोशनल बैरियर आपको करेक्ट करना पड़ेगा, आपको बच्चे के साथ रेपो स्टेब्लिशमेंट करना है, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। वो आप रिलेशनशिप अगर मेंटेन करते हैं, देन इमोशनल बैरियर कैन बी ब्रेक डाउन। अदरवाइज होगा क्या, बच्चा गैप बनाना शुरू कर देगा, ड्रॉप आउट करना शुरू हो जाएगा,
उसकी परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाएगी। तो आपकी उसकी जितनी भी इमोशनल इश्यूज हैं, रेपो स्टेब्लिशमेंट, स्पोर्ट, कोऑपरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको इम्प्रूव करना राइट। Thank you, sir. नहीं, जैसे आशा आपने बताया कि आपके पास एजुकेबल चाइल्ड है। अब आप एजुकेबल चाइल्ड में ना ये देखने की कोशिश करें कि उसका जो मोटिवेशन लेवल है ना, पेरेंट्स का, कम्युनिटी का और चाइल्ड का, वो बहुत। मैं आपको बताऊं, इसको मोटर स्किल्स सिखाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। उसको मोटर स्किल्स सिखाने के लिए आपको बिहेवियर थेरेपी वुड वर्क लाइक एनीथिंग। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे, इसके इसके पूरा एक मैनुअल है। अगर आपको लगेगा तो आई विल शेयर विद यू, दैट मैनुअल विल हेल्प इन मोटर स्किल्स। कभी भी हम डिस्कस करेंगे उसको, दैट इज वेरी हेल्प राइट। Subhashri asked how to eradicate social stigma from community. Subhashri, बेसिकली स्टिग्मा को खत्म करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज एजुकेशन, अवेयरनेस। आप अवेयरनेस जितनी ज्यादा होगी ना, उतना स्टिग्मा कम होगा। अब जैसे बात करें, अगर आजकल मूवी की बात करें, जैसे दीपिका पादुकोण ने ओपनली बोला कि मुझे डिप्रेशन, उसके ओपन बोलने से बहुत सारे लोग बाहर निकल के आए। उनको लगा कि ये तो इजी चीज है ना, हम शेयर कर सकते हैं। तो जितना मीडिया इसको, आजकल देखो आप मीडिया में जितनी मूवीज बन रही है, दैट इज रिलेटेड विद साइकेट्रिक इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, तो वो हमको ठीक करना पड़ेगा। वो कैसे ठीक होगा? अवेयरनेस के लिए, दैट इज अनदर आस्पेक्ट राइट। What is social barrier? Social barrier means community barrier. Stigma is a part of social barrier that we have to see. Right? Hello, sir. I can hear you. Am I audible? Please tell me. Yes, sir. Okay. Hi, sir. I'm Ruksha. I'm from Bangalore. I'm working in a school and I lead the counseling department of my school. I'm just sharing the problem of one of my special educators who has shared, and I was not being able to help my special educator. So I thought I'll just share with you. So basically, till now, what was the thing, like, that everything was online and children were attending sessions online, and even now some children are coming and some children are not coming. So it's more of like a hybrid mode that's going on. So there is this one child who is in grade 4 right now. He is having moderate ADHD, though it's towards the mild only. Academically, he is okay, but the problem has become like is due to this pandemic and staying home, he has become so addicted to phones and tab and all that. So what happens, though his parents were not very cooperative about this in the beginning, like parents were indulging the child with tabs and computer all the time because that was getting their work done. Like, he's not eating, so okay, let him play. Okay, he's not doing it, and he would just, if like he tries to manipulate his parents a lot, like he would always um if things are not going according to him, he'll start crying, he'll howl. So obviously parents sharma ke kabhi they would also agree, because obviously they live in a society, and he'll cry, or people will think that they're just beating the child. So it is getting really difficult for for my team who is handling the child. So this child was taking remedial sessions also, because he has some comprehension problem, and was also getting counseling sessions from another counselor. So what he's doing nowadays, in the beginning of the year, we were like, his individual counseling plan was mostly about helping him to so that he interacts in class, he listens to the class, he's attentive. So the counselors was working on his social skills, how he's interacting with the teacher, if he's being attentive or not. Nowadays what he does, he politely answers, he is listening. But recently I got to know from the parents that what he does, he's at the same time online also, and in another tab, like in the computer only, in another
window, he's playing games. And the parents, obviously the parents cannot always sit with him beside, so that he can also, they can control when he's playing or not. When parents are around, he would just open the school window and start listening to the class. Otherwise, he would play all day. So if you can suggest something, sir, like how to control, though I have told the parents that they can use some child lock, or they can just block those websites, and he can only be allowed to play after the class in the evening, maybe sometime. So anything else, sir? Because he is getting so cranky and he's not being able, they are not, even the parents are telling me crying that, ma'am, we don't know what to do now. Your name is Gupta. Yes, ma'am. Yes, sir. Thank you. Gupta, basically, there is two things which I want to share with you. Like if you are talking about ADHD, mild to moderate ADHD, there are few Yes. things which is very, very important in this particular group. One is manipulation. That is very important in this particular group. The second is temper tantrum. Activities increase and he learned how to manipulate the parents. That is he's very much intelligent. And due to this only, if you see this ICD 11, like ADHD to ODD to CDD, attention deficit to oppositional deficient, then conduct disorder, then antisocial personality. It's the domain, na? This is the range. So we have to tackle at that particular stage. That is very, very important, like ADHD child. So here there is two, three things which is very important. Like one is to make that list. Maybe you have made already that excessive and deficit behavior. Here we are talking about excessive behavior, and particularly in the domain of behavioral addiction, that is internet. Here, what we can do, see, behavior therapy is very fantastic, will work. And you see, for example, alternate therapy, like alternate management, is a part of shed clinic. So that is another aspect we can, inculcate few of the activity which can be good for the child. It can be adjustable to the child, that we can introduce here. The second important, the family education is very, very important. Like how to deal with the parents. You have to teach assertive training to the parents. If you won't teach assertiveness to the parents, problem will be standby. There won't be any solution. So if they will understand this assertiveness, if they want to say no means no, if they want to say yes means yes, then that child will understand that phenomenology. Otherwise, you know, whatever way I will try to manipulate, they will be manipulated. So assertiveness is the one training which you have to give to the parents. The second is, alternate training, time management technique, timeout technique. That is very much important in internet editing or behavioral editing. So these two aspects will go hand by hand. If you will teach with that perspective, you will definitely see the result. And second, another important, we have made one manual for ADHD in PDHD. With you, Rupta, in any time whenever we can be in touch. That manual is very helpful. I will definitely send that manual to you. You can go through that manual. That is for parents as well as for you. Sir, where to find that manual? That you can take my number from Tapan, sir. I will WhatsApp you. Okay, sure, sir. Thanks a lot. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, all of the participants, because they are the pillar of this program. I must be thankful to all the participants. And whenever you feel I can be helpful to you people, Kabhi, I mean PJ Chandigarh, if you think I can helpful for the every child, you can be in touch. You can share all the information through email only or whatever you. But we have to change this scenario. The basic aspect, we should make it more interactive. We should help. Information है, आपके पास मटेरियल है, लेकिन कितने लोगों तक पहुंच पाता है, दैट इज बिग। तो हमें बेसिकली इसको को ज्वाइंट एफर्ट लगाना है। मैं सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई एम डूइंग माय बेस्ट, नोबडी कैन डू, रूपसा इज डूइंग बेस्ट, नोबडी कैन डू, आशा इज डूइंग बेस्ट, नोबडी, नो, यू हैव टू मेक इट मोर कन्वीनियंट, है ना। वो जब होगा जब हम इंटरेक्टिव बनाएंगे, तो सारी इंफॉर्मेशन जो शेयर करने से वी कैन लर्न। विद दैट पर्टिकुलर इशू आई मस्ट बी थैंकफुल टू यू ऑल। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ सबका, ऑर्गेनाइजिंग टीम का, सर का। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Will I leave now? Leave, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.
नेक्स्ट रिसर्च पर्सन है मोहम्मद रेजा एराबी, बांग्लादेश, ढाका यूनिवर्सिटी. सर ऑलरेडी joined now. Hello, Next, sir. now Am I audible? audible, sir, audible. Yes, thank you very much. Uh, Mohammad Reza Arabi, Department of Education, Counseling and Psychology, University of Dhaka, Bangladesh. Topic: teaching learning process for individual with disability during COVID pandemic. Sir, start now. yes, sir. I am just trying to join through another device to Okay, avoid okay. any kind of hassle. Okay. Let me give some time. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir, it's visible. Yes. Thank you very much for inviting me to that workshop. So today's our presentation topic is teaching learning process for individual with disabilities during pandemic. Let's go to the next slide. Let me introduce myself. I am Mohammad Rejai Rabbi and I am working as a psychologist at Brak Institute of Educational Development, Brak University, Bangladesh, as well as I am from Department of Educational and Counseling Psychology, Dhaka University. And besides those, I am also working in several mental health related organizations like Nurture Life India as a country lead of Bangladesh. So it is going to be an interactive session and I am expecting all of your active participation. So guys, please feel free to share your present feeling. How are you feeling right now? You can say it or you can write it in the chat box. Like me, I am happy, relaxed. So I am in the middle of 8 and 9. So tell me about your feeling. How are you feeling now? Anyone can respond. I am waiting. Good afternoon. Yes. So relaxed. Yes. 9 Rupshadash from 910. So yes, that's good. 9 relaxed, happy. Mukul Roy 10. Joyful. Yes, good afternoon. So it's very important to identify our present. So we are all are joyful or relaxed or happy. That's great, guys. So let's go to the next slide. So as it is an huge platform and more than 229 participants are here, so we have to set some ground rules, otherwise it is going to be a mess, as we are a lot of people. So we will try to keep our microphone mute while not speaking, and we have to respect others, as I already mentioned several times that it is going to be an interactive session, so that so many people will share their own views, so it may contradict with our own values. At that time we have to be respectful to others, and we will try to be attentive, and we will try to show non-judgmental attitude to everyone else of that workshop. So guys, tell me, what are you expecting from that particular workshop? You can unmute yourself and say, what is your expectation? Or you guys can write it in the chat box. No, no one is expecting anything. What are you expecting at the end of the workshop? By seeing our topic, today's topic. Anyone can respond. I am waiting, guys. As it is an interactive session. Strategies to teach learning disabled children. And from Dipanshi today, I think I learned a lot from you. Yes, obviously we all will learn from each other's sharing. And what others are thinking, I'm waiting. Knowledge about, yeah, gathering knowledge. Yes,
Something was written by Vijay Pradeep Singh, but it's in Hindi. I'm not fluent in Hindi. New teaching techniques, need to know how to utilize reels for hearing impaired children, some knowledge and ideas. So thank you everyone. You guys have shared a lot of things. Shubhasri has written that to achieve some information and skills to deal with children and community. So you guys have lots of expectations and we will try to identify at the end of our workshop that whether our expectations are fulfilled or not. Okay. So let's go to the next slide. Yes, that's the fact. So as we all know that COVID-19 has impacted a lot us, and it has changed our meaning of life. And during to 2020, COVID when came and everything were in shutdown, our schools went off. So implementation of online learning came on that moment due to COVID-19 pandemic, because we have to adapt something new to continue our education process. So we have to go through lockdowns, physical distancing, and shifts in our learning patterns. Previously, we were used to regular learning. We used to teach or learn something from our physical settings. But due to COVID-19, there's a shifting from our regular learning to online learning. And as we already know that we all have gone through so many sufferings, lockdowns, physical distancing, and shifts in learning can have disproportionate effects in individuals with disabilities, according to the findings of World Health Organization and World Bank. So COVID-19 is not the very first time. It is not the very first pandemic. Previously, there are so many pandemic situations. There are several problems like SARS virus or so many viruses. So research have shown that lockdowns, physical distancing, and shifts in learning can have impact on the learning of individuals with disabilities. And as we know that individuals with disabilities are considered to have more health related needs, like sometimes they suffer from diabetes and other physical complications. So it's not like other, they have more issues than regular people. And online learning during pandemic can be challenging for individuals with disabilities and their parents, according to the findings of UNICEF, because I already mentioned in the earlier that we all were not used to online learning, and it becomes burden in some cases because there are lack of internet availability across whole Indian subcontinent, and so many issues. So online learning during pandemic can be challenging for individuals with disabilities and their parents. Let's go to the next slide. So remote learning during pandemic. So remote learning means learning through online platform or learning by staying at your home. So when everything were in shutdown and our schools remained off, we have to think a different process. We have to start online learning. But the problem was that parents are not fluent in understanding the technological capabilities, because we all have issues, some device issues, and they lack in their access to technology. Like we were not familiar to Zoom meetings or online meetings, and it's still true. Right now, we are so much aware of those online platforms, but back to the 2020, it was not common for all of us. So parents also lack in their access to technology, and it constrains in supporting their children with remote learning. And it is not only for the children with disabilities but also for regular education system students. And teachers also do lack in their access to knowledge and their skills to implement online learning. Like teachers are usually used to use marker pens, or they used to teach in regular classroom settings. Like they are not
capable enough on that moment. They weren't capable enough on that moment to teach in online platform. So this were the complications, and this were the things which was faced by all of us when remote learning during pandemic started. So let me minimize that. Yes. So there are some influencing factors for education of children with disabilities before the pandemic. Before the pandemic, there were some issues, and in that slide we are going to discuss about those things. So the total number of children 0 to 14 years old live with a disability vary between 93 million to 150 billion, according to the statistics of World Health Organization and World Bank in the year of 2011. And it is a matter of sorrow that 1 in every 5 students may develop a special need during their schooling. And it was the pre-pandemic scenario actually. It was the pre-pandemic scenario. And are you guys saying anything? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you. Thank you. ऑल पार्टिसिपेंट का माइक्रोफोन ऑन है तो इसलिए आवाज आ रही है, साउंड आ रही है. Okay, sir. So all of you are requested to turn off your microphone while not speaking. That's a request. Yes, Shubhasri has written that I am audible. So what I was saying that several factors hinder our educational involvement for children with disabilities, and it was in pre-pandemic situation, like where স্যার আপনি স্যার একটু ইয়ে করে দিন, আনমিউট করে দিন আপনারটা। ji, I have done it. Thank you, Taposhda. So what I was saying that several factors hindered their educational involvement for children with disabilities. And that was the situation before pre-pandemic, and pandemic added several hindrance on that situation. So let's go to the next slide. And it is saying that according to the findings of Burdeti et al. In the year of 2013, so difficulties in understanding the less restrictive environment in relation to online learning by the teacher. As I already mentioned that teachers were not capable enough on that moment to go on a online platform. They were used to provide teaching in regular classroom settings, but remote learning or online teaching was not very easy for them on that moment. And they also do have problem in implementing the principles of inclusiveness within online platform, because when children with disabilities are in school, it is very easy to plan different individualized plan for each student and do some collaboration with other members of the school, like school staffs, rehabilitation practitioners, and so many people. But it is not very easy when you are dealing with people with disability through online platform. And it is also saying it is also said that according to the finding of another 2 study by Pugach and Young, that online teaching is less formal than regular training. Like while one is on online platform, you can't track him or her whether he is listening to you or not, so it doesn't guarantee the appropriate teaching. So that's why it is less formal training in pattern. And another finding says that low motivation, technological problems, and as well as lack of parental support of students and lack of immediate evaluations of their performance by teachers are also influencing in inclusiveness in online learning, because it is very difficult to get enough motivation when you are learning something through online platform. Like when you are in school, you are sitting in your classroom, you are sitting in a bench, but when you are
in your house when you are learning something through remotely, and you may lie down or you may relax. So there is a chance of low motivation while you are learning something through online platform, and technological problems obviously, and it can hamper learning, technological issues. And we, as we all know, that we don't have enough internet access to all part of our Indian subcontinent, and it is similar in also Bangladesh also. If I am not wrong, it is also similar in India. So another factor is lack of immediate evaluation of their performance. When students were in regular settings, teacher can immediately evaluate them and give them an feedback. But it is not possible always. It is not, sometimes it is possible, but it is not always possible in online platform. Let's go to the next slide. So parental challenges in supporting children in online school activities. So previously parents role was just parents, like taking their children with disabilities into the school and coming back to the home. But right now, through online platform, they have an added role. They are not only parents, they have an added role as a teacher, and their level of responsibilities and their engagement level also have increased. Like they have to stay with their children when their children is on online classroom. So it becomes sometimes burden for all those parents. Like if you see the next point, it is saying that adding the role of teacher to parenting may influence family dynamics, leading to frustration for both parents and children. Like children is not familiar with the teaching pattern of parents. They always perceive their parents as friendly. They think that teacher only teach them, parents are their friends. But right now on online platform, teacher is not always with students, but parents are always with their child, and they are doing something like teacher. So that may be a topic of discussion, whether it is causing additional burden to parents or for children. So it also influences the family dynamics. How can it is influencing the family dynamics? As parents have to do so many different tasks in their household when their child was in school, like mothers have to cook, and fathers have to do other activities like doing office. But right now they are not doing those household activities with their full concentration because their children was at home, their children was disability is at home. That's why they have to provide enough attention to their children. So the next one is difficulties in handling children with disability may cause less motivation in parents to help their child in study. So I think I have concluded all those things through that point. Teachers' role as well as parents' role, both role becoming a burden for our parents of children with disabilities, and that is causing less motivation for them to help their children in study. And it is according to the findings of an study by Gronlich et al. So let's go to the next slide, next one. So obviously there are some pros and cons for everything. So there are some opportunities for the advancement of online learning on individual with disabilities. Like that allows all those teachers as well as for parents to develop a individualized plan or student-centered plan learning methods. Individualized education program, we all are aware of IEP, individualized education program. So it can be implemented quite nicely through remote learning if
there is enough collaboration between parents and the teachers as well as other staffs who are related to the development or betterment of the children with disability, and stimulating students independent learning and motivation to learn, and the use of self-regulation skills. Yes, the fact is, when children was on school before pandemic regular settings, he was always in under observation with their teachers or other staffs. Now it can be an option for some of the children with disability. They can think by themselves, they can brainstorm, and they can learn by their own, and it can increase their motivation to learn something. And another point is involvement of parents in remote learning can be an important for the academic achievement of individual with disabilities. Like I already mentioned that there are some pros and cons of everything. So in our previous slide, we were discussing about the burden for parents when they are acting as teacher. But in that slide, we are saying that parents can play an important role if parent is capable of giving enough attention to their children. It may increase children's motivation level or children's academic achievement level, and as well as getting emotional support from school parents, children, teachers during COVID-19 pandemic. Look, when first COVID-19 started, everything was off, and there was a chance of lack of emotional support from schools parents as well as their friends. They used to get so much support from others, but online platform started as an opportunity for them to continue that kind of support from their peer people, parents, other childrens, as well as teachers. So let's go to the next one. So in our previous slides, we have discussed about the current scenario or the recent past scenario of the education of children with disabilities. But in that slide or later slides, we are going to discuss how we can ensure an inclusive return to school for children with disabilities. Look, 7 categories were set by Education for Every Ability, and it's a roadmap for disability inclusive education, and it was based on 2 factors, like prior to school opening and after the school reopening. So let's go to the next slide. We are going to discuss more about those factors in those slides. The first one is a whole system approach. Whole system approach is saying that before reopening all those schools, we have to establish clear plans. We have to establish clear plans how we will start our schools, because children were almost 1 or 1.5 years out from their regular classroom settings. It is not going to be very easy for them to again come back to regular school settings. So we have to establish some clear plans, and we have to allocate some specific budget for them. Like we have to make sure that their washing facilities are ensured and they are wearing masks. So we have to allocate a specific budget, and we have to conduct a specific outreach and follow up with the families. Regular connectivity with the family members of children with disability. How they are doing in their home, children with disabilities, how they are performing in their home and how they are behaving in their home. We have to collect those information, and later on we have to follow up those things, whether they are continuing those things in school or not.
And we have to ensure specialist support services. Like we have to work in collaboration with special educators, rehabilitation practitioners, and so many people. We have to ensure whether special support services are continuing or not. And I have already mentioned about wash facilities. And the next point is ensuring referral systems. Like sometimes it is difficult for everyone in the school, like for teachers, like for special educators, to not to control or not to manage the children with disability. In that case, referral is the best way. When you are not capable of dealing with someone, you can refer them to another expert who is the capability of dealing with those cases. And ensuring measures to prevent transmission. COVID is not gone yet. COVID is not gone yet. If we are not wrong, it may remain according in us. It may remain in us, and we have to make sure that our children with disabilities are not infected in our school. We have to make sure that they are wearing masks and enough hygiene are maintained in school settings. So curriculum, pedagogy, and assessment. So the first point is creating and encouraging opportunities for teachers and parents to meet, discuss issues and expectations on the transition back to school. They are coming back to the school after a long gap. So we have to make sure what are their expectation, what they are expecting when they are coming back to school. And we have to provide some extra time as well as flexibility towards our children with disabilities, because they were out of school for a long time and their learning pattern have been changed. So we need to be flexible about timing. We can provide them some extra time, and we have to recognize their extraordinary pandemic circumstances and stresses. They all have gone through stresses, like they were at home, lockdown was there, they were not allowed to go outside. So we have to recognize those stresses and provide them emotional support. Like we can equip our teachers as well as our children with disabilities with the mental health needs. Like we can talk with psychologists, and we can take psychiatric help as well if needed, only if needed. And we can do some fun activities with them to make sure that their mental health is well now. And we have to equip our teachers to deal with those mental health needs. And we have to continue our regular support like previous time when pandemic was not there, for inclusive teaching pedagogies and making inclusive curriculum. And assessment is important. We have to check whether what we are doing is working or not. We have to check our curriculum and assessment in a regular basis. So supported teachers. In our previous slide, I already have discussed about support. I already have discussed about the mental health issues of the children as well as the teachers. Let me check the chat box. Maybe someone is writing something. No, no one is writing something. So we have to check the mental health of our teachers as well as other school staffs. Like it may become burden for them. Like they were also out of academic activities, physical academic activities for a long period of time. Teachers also. So dealing with children once again after a long time, and dealing with them with more flexibility and giving them more time may cause burden for our teachers as well as our school staff. So we have to make sure
their sound mental health. We can organize some stress management workshops. We can arrange some anxiety management related workshops, and several things we can organize for the betterment of the mental health of our school staffs as well as teachers. And addressing child protection issues and facilitating referrals. Like children with disabilities were at home for a long period of time, they may be the victim of bullying, or they may be the victim of gender-based violence. If we found something that our student or children with disability is the victim of those kind of issues, we have to refer to the authorized agency who are dealing with those kind of issues like gender-based violence or other issues. We have to clear about ensuring the safety of our children with disabilities. And in our previous slide, we are discussing about maintaining hygiene for our children with disabilities, but we also have to make sure the social distancing among all those teachers. We also have to be sure about their physical health. We don't want to see them as sick. And continuing support, training, and mentoring to the teachers for their inclusive education. We have to continue that support training. Continuing professional development, or CPD, it is called CPD. Through CPD, we can, like you, all of us are in that workshop. It is also a part of CPD. Through CPD, we all of us are sharing our each of others knowledge with each other, and by gathering those knowledge, we can implement those things in our regular life as well as our professional settings. So we have to make sure that our teachers are going through continuous professional development and they are receiving training, mentoring in a regular basis from the authorized persons. So in that slide, we are going to discuss about learning friendly environment. So as I already mentioned in the second or third slide, maybe, individualized educational plan, IEP, we can make sure that our children with disability is adapting the individualized education plan. An individualized education plan can only be implemented when there are so many members are working together for the betterment of a particular child, like one psychologist, one rehabilitation and practitioner, one occupational therapist if needed, one teacher, and other support staffs of the school. And we have to make sure that disability inclusive policies and procedures are maintained in our schools, like bullying policies, and so school safety measures are maintained in our school settings. And we also can continue our distance learning or remote learning. Like it will be very difficult for children with disabilities for themselves to continue physical learning, like they were in a position of online learning for a long period of time. So we can go on a hybrid way. We can continue both process, physical class as well as online class. So it can help them to adapt easily with the new normal situation. And addressing regressed interpersonal skills of the children with disability. Like before going to the pandemic situation, they may have some skills in regular school settings. Children with disability used to do some fine motor activities, drawing pictures, as well as so many fine motor activities. And we are not sure whether they have done it during COVID-19 pandemic when they were in
remote learning process. So we have to make sure that their skills are not regressed. If regressed, we have to try once again to improve those skills through our help. So effective transition. So before going to the lockdown situation or before the arrival of COVID-19, some of them were in primary school settings, and now they are much aged and they are going to join secondary school. So it's a shifting for them, and it's not very easy. It's not very easy for them. Like they were in class of junior people, right now they are much senior. So we have to ensure the successful transition, like they're easily adapting those factors. We try to be friendly with them. Like if you look at that picture, that teacher is trying to make fun with her students, and we also have to ensure the accessibility of appropriate facilities. Children with disabilities are receiving appropriate facilities. We have to make sure that. In the next slide, it is about partnership. So there are some self-help groups for children with disabilities. So many successful people who was disabled, but right now they are doing great. They are passing good time in their professional life or academic life. So we can build collaboration with those self-help groups or organizations of people with disabilities, so that our disabled child can get some enough motivation from them, like the fact that they can think themselves as we are not disabled, rather we are differently abled. We have the capability of doing so many things if we are given enough support by our society, by our family members. So building collaboration with self-help groups can be a great option for increasing the motivation level of children with disabilities. As well as we can focus on strengthening partnerships with special education institutes and intersectoral collaboration with the school nurse and health services. Like, as I already mentioned in my first slide, that children with disabilities may have some other physical complications. They may have diabetes and may have other physical issues. So we have to make sure their physical health as well. So we make collaboration with other health services. And we also make sure that we are in partnership with child protection and social protection provision services, so that our children with disabilities are getting enough support or enough focus from the members of our society, as well as several organizations of our community. So monitoring, it is also an important fact. We have to identify those children who are absent in daily activities, and then we have to identify the reasons of their absenteeism, why they are absent. Obviously there may be some issues which are restricting them for coming to the school, and regular follow-up is also needed. How that children is doing, how his or her social life is going, that is also important. So I think I have discussed a lot of things. Now it's time to open the floor. I want to hear from all of you guys. You guys can share it in English, or even if you want to speak in Hindi, you are always welcome. Even you can speak in Bangla. I can understand Hindi as well as I can understand Bangla.
I am a Bangla speaker. I can understand Hindi, so I can't speak Hindi, but I can understand. So it's time for a group discussion. I want to hear from you guys how you guys are experiencing in India, and sharing on teaching learning process for disabled individual during pandemic according to the Indian context. So other slide are references. So let me stop my screen sharing, and I am writing it on the chat box so that each of you can share your thoughts. Let me write it. Teaching, learning. Anyone of you can unmute yourself and can share your thoughts. I'm waiting. Anyone can respond. Teaching learning process for individual with I'm waiting, everyone. Please share. I want to learn from you how you are experiencing in India. And through group discussion, we all can. Sir, I have unmuted the. Yeah, thank you, sir. I have written it on the chat box, so please share your thoughts. Share your thoughts. Share your thoughts on teaching learning process for disabled individual during pandemic according to Indian context. How you guys are working in India. Sanjay Robidas has raised his hand. Do you want to say something, Sanjay? Hello, Sanjay. Or anyone. Anyone নমস্কার স্যার, can. শুনতে পাচ্ছেন? জি জি, please continue. শুনতে পাচ্ছেন? জি জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। Please হ্যাঁ, continue. বলছি স্যার, আপনি তো বাংলাদেশ থেকে বলছেন? জি জি জি। হ্যাঁ, বলছি বাংলাদেশে আপনাদের বিশেষ শিক্ষাটা কিরকম মানে বিস্তৃত আর কি, মানে আমাদের ইন্ডিয়ার ভারতের ক্ষেত্রে আমি পশ্চিমবাংলায় বাস করি আর কি, এখানে বিশেষ শিক্ষার কোনো একটা মানে বিশেষ জায়গা নেই, এবং গার্জিয়ানদের নেগলিজেন্সি স্পেশাল চাইল্ডদের মানে মানে একটা মানে বোঝা, সমাজের বোঝা ভাবে নেয় আর কি। তা আপনাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এগুলো কিভাবে নেয়, আর শিক্ষা কতটা বিস্তৃত আর কি, সেটা একটু যদি বলেন তো ভালো হয়। Yeah, thank you for your question. Yes, similar kind of situation is also in our country. Like there is so much negligence from our parents as well as society members. Like they thought that when a children is disabled, he is not capable of doing anything. But right now the scenario is changing. Right now we are understanding the fact that children with disability are not disabled actually, they are differently abled. If they are given enough care, they can be proven as an asset for our whole community as well as for our whole society. But the fact is, it is also similar kind of situation in the whole Indian subcontinent actually, I guess, not only in India but also as Bangladesh. But the scenario is changing. So I think you got your answers, sir. So I want to hear from others. Anyone can respond, please. It is going to be an interactive session. How you guys are working? I have something to see in the chat box. Let me check. Some of them are writing. Hello, sir. Yes, sir. Yes, please continue. Yeah, here in Bangalore, most of the, since it's an IT community, most of the classes and the thing are taken through online. We have been doing the online teaching,
And now that slowly the schools have started reopening, it's been a sort of hybrid kind of teaching, which is happening. And I think the children have, by the second year, have adapted very well. Yeah. So I think we have been doing that from last 2 years. Yes, Yeah, ma'am. Thank you that's very how much it's for your been sharing. happening here. And I also mentioned about that hybrid learning in my slide, because I think it's the best way for us right now, as we are passing very hard time due to pandemic, and we can continue hybrid learning, and it can be impactful for our learners, our children with disabilities. I am waiting for others' response. Anyone can share? Hello, sir. Am I audible? Yes, you are audible, Rajesh. Please go ahead. सर मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जो अभी बोल रहे थे हाइब्रिड लर्निंग, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, वो थोड़ा बता सकते हैं? Yeah, the advantage is that, can you please mute yourself? Yes, thank you. The advantage is that they can learn something by staying at their home, and there is the chance of getting emotional support from their parents as well as from their other peer members through online platform without going to the school, and it ensures their physical health. Like I already said that, and we all are aware of the fact that COVID is not gone yet, so it may impact them. So it is the advantage that through online learning, we can ensure their physical health safety. And the disadvantage is that in the last time when I was listening, maybe Rupsha Das asked a question to another speaker. She was saying that there was a chance of using too much device addiction. When parents are giving too much flexibility to those devices, that child may become addicted to those devices, and it may impact that child's regular activities. Like when child is eating, he or she is watching device, he or she is using device. So that is the disadvantage. Actually, both advantage and disadvantage. It is the combination of pros and cons. I think you got your answer, Rajesh. Yes, sir. Thank you. Anyone else? Anyone else can ask your questions, or you're sharing how you guys are doing in India? Yeah, Asha has written on the chat box that I took online classes of the children with special needs during the pandemic. I experienced that children are able to concentrate on the activity for hardly 20 minutes. What should we do to enhance the concentration of the child during online class? Yes, that's the problem actually, Asha. That's the problem. It's very difficult for regular people also to give enough concentration during online learning. So what you can do some fun activities in a regular interval, like teaching something for 20 minutes, then do a fun activity, turning on everyone's camera and do a fun activity like singing a song or reciting a poem, then continue for another 20 minutes. I think that can increase their energy level to focus much on online learning. Otherwise, if you are continuing for 1 hour or 2 hours, it may become burden for them, and it may become burden for also you also. It's very difficult to provide lecture in a continuing process for 1 hour. It's very difficult. Take some break and then focus. So I think you got your answer, Asha. Anyone? Yes, thank you. Anyone else? Adipada Mandal, you have raised your hand. sir. Do you want to say something, sir? Oh, not. Guys, can you please turn on your camera so that we can look each other? So to make sure that it is interactive and we can take a picture.
I'm waiting for everyone's camera. Can everyone please turn on your camera? Yes, I'm waiting. Yes. Thank you very much, everyone. So I'm waiting for other questions as well as sharings. If you want to say something or if you have any feedback regarding the presentation, please feel free to share. Everyone is writing, thank you, thank you. I am expecting to listen something from you guys. Anything you can share if you want. Sanjay Ravidas has raised his hand. Sanjay, do you have something to say? Keka Ganguly has asked for the slide, I think. I have already provided it to Taposhda. I think Taposhda will circulate the slide with all of you. Thank you. Thank you very much. Very informative. Yes, we all learned from each other. Taposhda, I think I am done because participants don't have any question, I guess. Taposhda, are you there? হ্যাঁ বলুন স্যার। স্যার আমার মনে হয়ে গিয়েছে, হ্যাঁ আমরা শেষ করেছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। So thank you everyone for being such responsive and sharing all of your issues or concerns with me, and thanks for being attentive during the whole session. I am looking forward to meeting you once again in upcoming sessions if I have given the opportunity. So thank you. Take care. Bye bye. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you. থ্যাংক ইউ। अच्छा, अभी क्या जो हम लोग का सेशन है, अभी ये वाला सेशन फर्स्ट हाफ का सेशन अभी खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। जो सेकंड सेशन है 6 से स्टार्ट होने वाला है। 6 से जो थर्ड जो सेशन है, तो 1 आवर्स ब्रेक। तो हम लोग 1 आवर ब्रेक नहीं देंगे। हम लोग जो रिसोर्स पर्सन के साथ बात करके हम लोग 30 मिनट आप लोग के लिए ब्रेक दे रहा है, ठीक है ना। आप लोग 5:30 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम व्हाट्सएप में दे देंगे और रिसोर्स पर्सन का साथ हम लोग रिसोर्स पर्सन का साथ हम बात करके आप लोग को व्हाट्सएप में हम लोग दे देंगे टाइम टेबल। प्लीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिए 30 मिनट बाद में, ठीक है ना। ओके, अभी ब्रेक चल रहा है, आप लोग लीव हो जाइए।